Allu Arjun, the icon star, did not congratulate him or thank him during the promotion of the film. He had put out posts for Pawan Kalyan and Chandrababu Naidu, not so much for Revanth Reddy. What are you picking up from the ground? Where are we headed before that final January 3 court hearing? देखिए, पुष्पा 2 के विवाद के बाद जिस तरह की राजनीति हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर, खासतौर पर आंध्र प्रदेश के अंदर जिस तरह की शुरू हुई थी, वो दिन ब दिन लगते जा रही थी। कई दोनों स्टेट के कई राज्य के जो पॉलिटिकल पार्टियां थे वो दो टुकड़े में बढ़ चुके थे। कोई पार्टी अल्लू अर्जुन की फेवर थी तो कोई पार्टी अल्लू अर्जुन के खिलाफ थी। आखिरकार अल्लू अर्जुन की जो बेल पिटिशन थी आज हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में, एक तरफ पुलिस की तरफ, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के एडवोकेट की तरफ से पूरी तरह सुनवाई हुई है। मगर फाइनल जजमेंट जो है अगले साल यानी 3 जनवरी को रखा गया है। नामपल्ली कोर्ट के अंदर आज फाइनल इस बात की भी पूरा तरफ एक सफाया हो चुका है कि सुनवाई तो पूरी हो चुकी है, अब जजमेंट आना बाकी है। देखिए, दूसरी तरफ पवन कल्याण इस मामले को खुलकर उन्होंने भी कहा कि अगर अल्लू अर्जुन की जगह पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी होते तो शायद इसी तरह की कार्रवाई होती थी। देखिए, बहुत छोटा मामला था। अगर उसी वक्त फिल्म इंडस्ट्री के लोग या फिल्म यूनिट अगर रेस्पॉन्ड करता, अगर उसके परिवार को जाकर मिलता तो शायद यह मामला इतना बड़ा नहीं होता था। उन्होंने पवन कल्याण ने कहा है। पवन कल्याण दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि उन्होंने आज ऑलरेडी और आगे भी ये कह दिया कि राजनीति अपनी तरफ रखनी चाहिए, मगर जिस तरह की कानूनी कार्रवाई रेवंत रेड्डी ने की है वो बहुत अच्छा किया है। रेवंत रेड्डी जिस तरह की फिल्म इंडस्ट्री को जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा सा डेवलपमेंट लेके जाना चाह रहे हैं। देखिए, एक तरफ पुष्पा 2 की फिल्म का जो रेट जो बढ़ाया गया था, ये भी कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की बात ही रेवंत रेड्डी ने कहा है। रेवंत रेड्डी का नाम ना लेने की वजह से इस तरह का आरोप भी बार बार आ रहा है कि रेवंत रेड्डी का नाम नहीं लेने की वजह से उन्होंने पुष्पा अल्लू अर्जुन पर कानूनी कार्रवाई की। ये तमाम बातें गलत है। देखिए, एक राज्य का डिप्टी सीएम जब बात कहता है तो कहीं ना कहीं इस बात के अंदर सच्चाई भी है, इस बात को आम जनता मानती भी है। जो कुछ भी हुआ है संध्या अटैक के वक्त वो जो गलत हुआ था, मगर उस पर राज्य सरकार को रेस्पॉन्ड करना चाहिए था। मगर खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री भी उस वक्त अगर इन हालात को अगर कंट्रोल करती, अगर उसके परिवार के लोगों से जाकर बात करती तो शायद यह मामला इतना बड़ा नहीं होता था। All right, Noor Mohammed bringing us the live details. Many thanks, Noor, for joining with us here. As and when you have breaking developments for us vis-a-vis the Sandhya Theatre stampede case, we're going to keep coming back to you for more. Now, Pawan Kalyan, in the latest, reacting to the entire episode, suggesting that the actions taken by the Revanth Reddy-led dispensation were not wrong altogether, and it's not really right to target the Chief Minister of the state. All right then, shifting our focus here to politics that's playing out at the national level vis-a-vis the passing away of former Prime Minister Manmohan Singh, because from the seating arrangement at the funeral service to the construction of a memorial for former PM Manmohan Singh, politics continues to play out over his passing away. Now, BJP leader Amit Malviya, he has stoked controversy, alleging Rahul Gandhi has undermined the national mourning period by travelling to Vietnam. And he says Rahul Gandhi is there to ring in the new year. Take a look at what he said. He said, and I quote, "While the country is mourning Prime Minister Dr. Manmohan Singh's demise, Rahul Gandhi has flown to Vietnam to ring in the new year. Rahul Gandhi politicized and exploited Dr. Singh's death for his expedient politics, but his contempt for him is unmissable. The Gandhis and the Congress hate the Sikhs, never forget that Indira Gandhi desecrated the Darbar Sahib." राहुल गांधी के समय पर एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पार्टी बन चुका है। एक संवैधानिक पद को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष से बदलकर लीडर ऑफ पार्टी और लीडर ऑफ पर्यटन बना रखा है। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। वैसे राहुल गांधी और पार्टी, राहुल गांधी और विदेशी पर्यटन, ये अब बहुत ही सामान्य बात बन चुकी है।
याद होगा आपको कि जब 26/11 जैसा हमला मुंबई पर हुआ था, तब भी अखबारों में छपा था कि कैसे राहुल गांधी रात भर नाच गाना पार्टी कर रहे थे। और आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है, केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी थी। Well, now here's how the Congress party is reacting to it. Congress leader Manikam Tagore replied sharply with a picture of a road diversion board that was posted on his social media as well. And the caption of that post, it read, and I quote, "When will the Sanghis stop this take diversion politics? The way Modi denied Dr. Sahib a place for cremation on the Yamuna banks and how his ministers cornered Dr. Sahib's family is shameful. If Mr. Gandhi travels privately, why does it bother you? Get well in the new year." We also have a reaction coming in from Tariq Anwar, the Congress leader. Listen in. देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो तिल को ताल बनाने का उनको इस मामले में महारत है। हर चीज़ को एक जिसको कहते हैं कि बनाकर वो पेश करते हैं लोगों के सामने। हकीकत क्या है वो सब लोग जानते हैं। देखिए, राहुल जी यहाँ लगातार जब तक मनमोहन सिंह जी की पूरी जो क्रिया होती है वो नहीं होगी तब तक वो कहीं नहीं गए और थ्रू आउट साथ में रहे, उनके परिवार के साथ रहे। और ये बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही है कि वो भटकाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया, उनको 2 गज ज़मीन नहीं दी उनके स्मारक बनाने के लिए, तो उस पर लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो इस तरह की बातें, फजूल की बातें कर रहे हैं। Meanwhile, in another controversy over the absence of the Congress leaders during the ash gathering, Congress leader Pawan Kalyan, he came out in the Congress party's defense, and he said senior Congress leaders did not accompany the family to gather and immerse the ashes of Manmohan Singh ji out of our deference to the privacy of the family. After the cremation of our beloved departed leader, Srimati Sonia Gandhi ji and Srimati Priyanka Gandhi Vadra ji met the family at their residence, and we were only trying to well respect the privacy of the family, is what Pawan Kalyan says. But needless to say, politics over the passing away of former Prime Minister, it continues to take shape, from the seat arrangement at the funeral to the construction of the memorial, and now, well, Rahul Gandhi's alleged trip to Vietnam during national mourning. Is it disrespect or not? Well, we'll let you answer that particular question. But shifting our focus here to another political story, this time coming in from West Bengal, because you've got Mamata Banerjee, leader of the state, in her first visit to Sandesh Khali since the protests that broke out earlier this year over the allegations of land grabbing and sexual harassment by local Trinamool Congress leaders. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, she addressed a public gathering whilst she was in Sandesh Khali. Now, Banerjee had earlier accused the BJP and other opposition parties of spending huge amounts of money to spread fake news in the region. She said, "Don't entertain bad people here. I know big money was spent to spread fake news, but I will not say much about it. Lies don't last long. The truth always comes out." Now, without directly referencing the violent protests that marred this area earlier this year, Banerjee also assured the public that all was forgotten, all those issues were taken care of. She also cautioned women in Sandesh Khali, addressing them, "Don't be tricked by bad people. Even if someone asks you to go with them, do not." The Chief Minister, who was in Sandesh Khali to distribute benefits under various state schemes, emphasized her vision for the region. She said, "I want the women and men of Sandesh Khali to be #1 in the world. We need to break the conspiracy, threats and fake people." Banerjee also announced that the Star Theatre in Kolkata would be renamed Binodini in honor of Nati Binodini, and a 60-bed hospital that will replace the current 30-bed facility in Sandesh Khali. The state chief minister also urged the public not to pay money for any government schemes, adding, "If anybody asks for money, do not give it." Another political development vis-a-vis the national capital. You've got Chief Minister of Delhi, Atishi, that has issued a strong directive to ensure the safety and convenience of women passengers using public transport. Addressing a press conference earlier today, the Chief Minister announced that drivers and conductors of DTC and cluster buses will face suspension if they fail to stop at designated stops to pick up female passengers.
The Chief Minister encouraged women to document and report such incidents by photographing the offending buses and sharing them on social media, enabling swift action against errant drivers and conductors. The Transport Department has also issued an official order emphasizing the responsibility of drivers and conductors to ensure that women passengers are not left stranded. Chief Minister Atashi reiterated the government's commitment to empowering women, highlighting that the free travel scheme through pink passes aims to make public transport accessible and safe for all women. She emphasized that the Delhi government reimburses transport operators for these passes, leaving no financial excuse for buses to bypass the female passengers. Listen in to what the Delhi Chief Minister had to say. सबसे पहले तो मैं दिल्ली की महिलाओं को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वो बसेस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रैवल करें, उसके लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी हुई है। क्यों? क्योंकि जब महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होगी, महिलाएं अपने घर से बाहर निकलेंगी, लड़कियां कॉलेज जाएंगी, महिलाएं अपने घर से दूर भी काम की तलाश कर सकती हैं और महिलाएं जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलती हैं, किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का उससे विकास होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। दिल्ली में सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की गई है और हम प्रतिबद्ध हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में बसों में ट्रैवल करें। हमने दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश निकलवाया है और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी गई हैं डीटीसी के क्लस्टर के सभी बसेस को, सभी कंडक्टर्स को, कि अगर कोई भी महिलाओं के लिए बस ना रोकता हुआ पाया गया, अगर कोई भी ऐसा ड्राइवर है, कोई भी ऐसा कंडक्टर है जो सिर्फ महिला पैसेंजर्स को देख के तेजी से आगे निकल गया, बस नहीं रोकी, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ड्राइवर को भी सस्पेंड किया जाएगा, कंडक्टर को भी सस्पेंड किया जाएगा। The nominees for the ICC Men's Test Cricketer of the Year, they have been unveiled, showcasing a stellar list that includes 2 England batting mainstays, a rising star from Sri Lanka, but all Indians are going to be rooting for our very own pace spearhead. That's right, India's Jasprit Bumrah, who marked a spectacular return to Test cricket in 2024 after recovering from a back injury last year, is among the nominees with 71 wickets from 13 tests at an average of 14.92. Bumrah had his most prolific year yet. His performance was outstanding across varying conditions, from the pace-friendly pitches in South Africa and Australia to the more challenging surfaces at home. His crowning moment came during India's tour of Australia this very on, where he led the team in the absence of regular captain Rohit Sharma. Bumrah's brilliant 5-wicket haul in Perth following India's first innings collapse was pivotal in India's massive 295-run victory. He also claimed 3 crucial wickets in the final innings to seal the win, earning him the Player of the Match award and propelling him to the top of the ICC Men's Test rankings. Joining Bumrah, of course, are 2 English batsmen, Joe Root, Harry Brooks, and Sri Lanka's Kamindu Mendes. The voting gets active. I think all fans should get clicking right away. And before we wrap this news wheel up, as the winter tightens its grip on North India, temperatures are dropping fast, bringing both beauty and challenges. From foggy streets in Delhi to snow-covered peaks in Himachal and Uttarakhand, here's a look at how the region is embracing the chill. Take a look. Many thanks for watching. North India embraces the winter season's chill as temperatures continue to plummet. North Indians, brace yourselves as the region is plunging deeper into the winter season, with temperatures taking a nosedive due to western disturbance. The India Met Department forecasts a drop of 3 to 5 degrees Celsius over the coming days across northwest and central India. States like Himachal Pradesh, Punjab and Haryana are preparing for cold wave conditions. Dense fog warnings for Punjab and Haryana spell possible travel chaos as visibility drops to a trickle.
one active western disturbance influenced northwest and central India on 27th and 28th. It had caused heavy snowfall over the high reaches over Himalayas and even heavy rainfall over plains. Now system is seen as a circulation over northwest Uttar Pradesh. But if you see, there is a no moisture feeding over in the system, so we are not expecting any weather over northwest India due to these systems. The chill, courtesy of a western disturbance, a cyclonic circulation over northwest Uttar Pradesh, stretching skyward to nearly 6 kilometers, and another circulation influencing Rajasthan and Gujarat as well. In Delhi, the minimum temperature has dipped to a nippy 12 degrees Celsius. The city is wrapped in fog, and authorities are stepping up with 235 night shelters across hotspots like Ames and Lodi Road, offering vital relief for the homeless. Shifting our focus to Jammu and Kashmir's Doda district, where the skies have cleared, unveiling stunning landscapes after a fresh snowfall. From Bhadarwa to Gundna, pristine white blankets transform the region, whilst the Indian Army patrols in the heavy snow at higher altitudes, creating awe-inspiring scenes. In Budgam, the magic of Chilai Khalan, Kashmir's harshest winter days, is on full display, with snow-covered plains and rooftops glistening in the sunlight. Himachal Pradesh, meanwhile, is a winter wonderland. Heavy snowfall across Lahore Spiti, Kinnaur and Shimla has roads and rooftops under snow. Tourists are flocking to Solang Valley in Manali for adventure and scenic beauty, whilst fresh snow spells hope for the farmers as well. हाँ, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, और सब पेड़ पे भी आप देखोगे तो फिर बर्फ गिरे हुए हैं. खूबसूरत, बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ था 2 दिन से, और आज आप देख ही रहे हो कि पूरा सब जगह स्नोफॉल हुआ है. बहुत खूबसूरत लग रहा है, और आप ये देखोगे तो स्नोफॉल बहुत ही गहरा हुआ है, मतलब 2 दिन से बहुत ज्यादा हुआ है. यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, और मेरे हस्बैंड सेकंड टाइम यहाँ पे आए हुए हैं. मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा यहाँ बर्फ होगी और इतना मैं एंजॉय करूंगी. बहुत मजा आया, और अभी भी पूरा मजा लेना बाकी है. आज तो मौसम खुल गया है, तो अच्छी खासी धूप है और हमने बहुत एंजॉय किया है. यही राय रहेगी कि सुबह जल्दी निकल जाएं ताकि ट्रैफिक वगैरह से बच जाएं. जन्नत है, बट आई फील एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी केयरफुल. मैंने कहा बाहर हम जाते हैं तो मैंने देखा है मोस्ट प्रॉब्ली टैक्स. आई थिंक इफ वी स्टार्ट टैक्सिंग टूरिस्ट ना और पास बनाए ना, ये जो गाड़ी गिरने का सिलसिला है और ट्रैफिक जाम लगने का सिलसिला है वो नहीं लगेगा. And in Uttarakhand, the holy shrines of Badrinath and Kedarnath are a sight to behold, swaddled in snow after a heavy downpour. Winter has arrived in its full glory. North India dazzles under a frosty embrace, even as the chill bites harder. But as winter paints these breathtaking landscapes, a word of caution for the travelers. Check weather updates before heading out, carry adequate winter gear, and drive cautiously on snow-covered roads. Nature's beauty is best enjoyed safely.